After a landslide victory in the Punjab polls, the Aam Aadmi Party has now set its eyes on expanding its base, and they have announced that they will be contesting all 182 seats in the Gujarat elections in the home state of Prime Minister and the Home Minister Amit Shah. केम छो? मजावा? क्या नजारा है? अंदर दिल में कुछ होता है जब तिरंगे को देखते हैं इतने सारे तिरंगे चारों तरफ. Amidst a sea of tricolour, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal today blew the bugle for his next target, Gujarat polls, which are slated to happen later this year. Upbeat over its sweeping victory in Punjab, the new Chief Minister Bhagwant Mann also accompanied Kejriwal. The leaders who carried out a 2-kilometre-long roadshow or Tiranga Yatra in Ahmedabad asked Gujarat's public to give Aam Aadmi Party a chance. अहंकार हो गया इन लोगों को 25 साल में. अब ये जनता की नहीं सुनते. एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, जैसे पंजाब के लोगों ने दिया, जैसे दिल्ली के लोगों ने दिया. एक मौका आम आदमी पार्टी को दो. अगर हम पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना. एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, सारी पार्टियां भूल जाओगे दोस्तों. अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, हमारी तैयारी है गुजरात की. Kejriwal declared last year that Aam Aadmi Party will contest all 182 Gujarat Assembly seats. AAP also performed well in the local bodies elections held in March 2021. AAP won 42 seats, 31 seats in Taluka Panchayats, 9 in municipalities and 2 district Panchayat seats. But despite these crowds, Aam Aadmi Party faces a number of challenges in Gujarat. In 2019, AAP was unable to win a single seat in Gujarat. All its 29 candidates had lost their deposits. The party faces a tough challenge from the BJP, which has a strong and wide network of ground workers. AAP lacks organizational presence in Gujarat. PM Modi continues to spearhead the campaign in Gujarat, which is his home state. The Prime Minister is set to visit Gujarat again later this month to inaugurate development projects worth over 2,400 crore rupees. But AAP workers who came from across various corners of Gujarat to Ahmedabad today said that the party will be able to change its fate this time. केजरीवाल जी जो दिल्ली में जो सब कुछ चला रही है कि कॉलेज स्कूल वगैरह ऐसे गुजरात में होना चाहिए. सिर्फ मुद्दों पे बात करनी है, शिक्षण पे बात करनी है, खेडूतों की जो परेशानी है, जो महंगाई है, उसके बारे में बात करनी है. इसके बारे में तो कोई भी बीजेपी का कोई भी नेता हो, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है. जो सरकारी स्कूल है सब बंद कर दिए, सब खानगी कर दिया है. आम आदमी पार्टी ये सब कर सकती है, बीजेपी का काम नहीं है ये. Kejriwal and Mann also visited Mahatma Gandhi's Sabarmati Ashram in Ahmedabad, where the leaders were seen spinning Gandhiji's iconic charkha, in line with AAP's focus on building a unique identity by invoking leaders and issues of India's freedom struggle. But politics over Kejriwal's visit has started already, with BJP IT cell chief Amit Malviya tweeting a video accusing the Aam Aadmi Party of bribing people to participate in its roadshow. है भाई, रैली में आया तो पैसा से ना बेचो जो भाई. Last time the allegations that the Aam Aadmi Party leaders faced in 2017 was that its top leaders did not make their presence felt on the ground and did not boost the morale of the party workers. But this time the party leaders have hit the ground running and plan to change the fate in their favor. In Ahmedabad with camera person Sachin Gupta, this is Trivedi for NDTV. All right, so let's take this forward now. Delhi, Punjab sorted. Next, Gujarat. AAP has sounded the poll bugle in Gujarat. Will the AAP be the new force in the Gujarat Assembly elections? Well, joining us is Mr. Isudan Gadvi, senior leader of the Aam Aadmi Party in Gujarat, and Sujata Pandey, political analyst with pro-BJP leanings. But Mr. Gadvi ji, आपको पहले first to you. आप पहली बार गुजरात में लड़े in the 2017 assembly polls.
बट उनको एक भी सीट न जीत पाए उस समय. आपके सारे कैंडिडेट्स लॉस्ट देयर डिपॉजिट्स. व्हाट्स गोइंग टू बी डिफरेंट दिस टाइम, सर? बिकॉज दिस इज गुजरात. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम Punjab. This is a stronghold of the BJP. BJP has been ruling the state since 1995. This is the home state of the Prime Minister and the Home Minister. Mr. Gadvi? All right, let me try and get in Ms. Pandey, Sujata Pandey, and we'll try and get the line up there with Mr. Gadvi again. Sujata, AAP has already tasted, if I look at it, I can look at this picture completely differently also. They tasted their major success in the Surat municipal poll. So it's not just about winning in Delhi or winning in Punjab, but even in Gujarat, they have tasted success. They won 27 seats. They are really the principal opposition party in Gujarat. So a worry for the BJP. Okay. So let me just, this has been widely circulated, Sarah, and I think it's time that I bust this myth. You know, if you see 2016 elections, the municipal elections, the Surat, the same. You know, the similar thing has happened with Congress also, when there was a rift between the Patidar community, which is around the 19% vote in Gujarat. I mean, 19% population and as a major voters in Gujarat. The same thing has happened with in 2021 also with AAP, when they won 27 seats in the Gujarat municipal elections. But right after it, you know, when the Gandhinagar and the other two civic bodies elections were held, BJP swept it. AAP got only one seat. Okay, this is and why this has happened is because this entire support, or supposedly this entire support base for AAP was not the support for us, but because the tussle between the BJP and the Patidars, which BJP had solved by the time the other civic polls had happened. And that is why you see the AAP getting nothing, just one seat out of that. So, you know, to say that a municipal election is a reflection of a general assembly or an election of a assembly, I mean, general election or assembly election is far-fetched dream, you know, in my opinion. I really don't buy that point. Mr. Gadvi, we're going to try you now. Ms. Pandey कहती है कि this is a sapna. AAP is dreaming if it thinks about winning in Gujarat. देखिए, पहली बात तो ये है कि गुजरात की जनता ने मन बना चुके हैं, तो पांडे जी कहे या कोई और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. दूसरा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया गांधीनगर के इलेक्शन का. मैं उनको और सबको, आप सब जानते हैं, बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये निकाय का चुनाव होते हैं, उनके अलग होते हैं. अब दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में 70 में से 67 सीट असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ला कर आए थे, और जो एमसीडी थी वो भाजपा जीती थी. अब चंडीगढ़ का आप देख लीजिए, उससे पहले आप पंजाब के जो हमारे अभी इलेक्शन लास्ट ईयर हुए थे पंजाब में निकाय चुनाव, तो उनका फर्क है. दूसरा, बीजेपी को आप लोग क्यों चुनेंगे? और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी बुरी है या कांग्रेस बुरी है या क्या कर रहे हैं, उनको हम ये जनता को ये मैसेज दे रहे हैं. अभी देखो, 3 दिन पहले 11वीं बार एग्जाम का पेपर लीक हुआ. अब कोई भी बच्चा है, कोई भी अपना बच्चा है, वो पढ़ता है, तो उनकी पेरेंट्स को ये लग रहा है कि मेरा बच्चा कोई एग्जाम में पास हो जाए, कोई उसकी नौकरी लग जाए. बीजेपी की ताकत ही नहीं है वो एग्जाम ले सके. पूरे पेपर फूट रहे हैं. पेपर लीक होने के लिए से सारा वन शुड वोट आउट बीजेपी. One second, let him finish and I'll come back to you. नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेट मी फिनिश. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से लोग थक चुके हैं. दूसरी बात कि कांग्रेस यहाँ ऑलरेडी खत्म हो चुकी. देखो, तीसरी पार्टी को अगर 6% से ज्यादा अगर कहीं पे भी वोट मिलते हैं, केरला में भाजपा को कभी 5% से ज्यादा वोट 25 साल में नहीं मिले, तो वहां उनकी एंट्री खत्म है. लेकिन आप देखो, दिल्ली में, पंजाब में, अब गुजरात में भी हमें 22 से लेकर 28% वोट मिले हैं निकाय चुनाव में. और जिस तरह से हमारा संगठन बन चुका है, 52,000 बूथ है यहाँ पे गुजरात में, उसमें 32,000 क्लियर हो चुके हैं. अभी भी हमारा संगठन है वो कांग्रेस से आगे बढ़ चुका है. ये बात अलग है कि भाजपा है वो यहाँ अपने सालों से, 27 साल से, तो पूरी मशीनरी ये सब कामें लग रहे हैं. लेकिन जनता जब तय करती है, तो आम आदमी अगर तय करता है, आम आदमी रास्ते पे आता है, एजुकेशन, हेल्थ अगर प्रश्न है, प्रॉब्लम्स है, तो आप मान लीजिए कि खास आदमी को घर पे बैठना है.
आप पंजाब का एग्जाम्पल देख लीजिए, चन्नी जी, बादल जी, सिद्धू जी सब घर पे बैठ गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, नहीं करते थे। तो मामला ये है कि गुजरात की जनता तय करने वाली है। और आम आदमी पार्टी, आज माननीय अरविंद जी और भगवत मान जी आए, आप उनका तिरंगा यात्रा में जनसैलाब देख लीजिए, तिरंगा यात्रा में लोग इतने रिस्पॉन्स भी दे रहे थे। तो उसका मतलब ये है कि गुजरात में अब लोग अपनी जनता की सरकार चाहते हैं, नहीं कि खास आदमी। So there's a vacuum. You're saying there's a vacuum. There's an opportunity. There's a chance there for AAP, and you want to strike while you think you can strike while it's still hot. Ms. Pandey, quick response, and then I have one more question for Mr. Gadvi. Okay, so I will go point by point. He spoke about the Janadhar and Jan Salab. You showed in your own bites that how people were paid money to get the crowd and come here. So that's point a number one. controversy. I'm not. We can't confirm that. You showed it. You showed it. Anyway, second, Sara, I mean, it's very important. एक second, मुझे बोल, आप बोल लिया, मैं बोल लेती हूँ. Okay, Mr. Gadvi, just तो पंजाब में आपने पंजाब का एग्जाम्पल दिया, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि गुजरात और पंजाब में बहुत डिफरेंसेस हैं. डेमोग्राफिकली दे आर टू डिफरेंट स्टेट्स. केजरीवाल हैव बीन एबल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन दिल्ली एंड इन पंजाब बिकॉज ऑफ the help of the Sikh community, which is not there in Gujarat. Okay, that's point number one. Second thing is, and have a data, and you will see wherever Kejriwal has been successful, it needs a Congress ruled state which has failed in delivering its promises. But when it comes to a BJP ruled state, whether it was Uttarakhand, whether it was Uttar Pradesh, whether it was Goa, whether it was Northeast, or even in terms of South when he tried in the early years, he failed. He was okay. The deposit. We are still 9 months away. We will continue to have this debate going forward. But sir, I have a question for you. There's always this debate over who the face will be in Gujarat for the Aam Aadmi Party, because they will be taking on Prime Minister Modi. So some talk that you will be the chief ministerial face for the Aam Aadmi Party. Is that true? देखिए मैडम का मैं 30 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे क्वेश्चन को भी आंसर कर लो सर. गुजरात 2017 में चला जाता, 99 सीट पे आ गया था, 92 चाहिए यहाँ 182 में से, इसलिए गुजरात बहुत अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं. दूसरा कि फेस तो जनता है, और हम जब चुनाव नजदीक आएंगे तो जैसे पंजाब में डिक्लेयर किया वैसे डिक्लेयर भी करेंगे. और रही बात हमारी, तो हम सब आम जनता है, आम आदमी है, और गुजरात की जनता तय करेगी कौन फेस हो. All right. Mr. Isudan Gadvi and Sujata Pandey, thank you both for joining us.